So we continue with our revision. Palate is one area again very ignored by the students. Palate has hard palate and soft palate. Hard palate is up to here. Hard palate is made up of four bones. Palatine process of maxilla. There are two palatine process of maxilla. There is one intermaxillary sulcus. Intermaxillary sulcus. And then there is the palatine bone. But we would say horizontal process. Where did we see the perpendicular process of palatine bone? In the lateral nasal wall. Lateral nasal wall जब हमने ड्रॉ किया था वहाँ पे perpendicular process of palatine था. यहाँ पे horizontal process of palatine है. Then this is interpalatine sulcus. Interpalatine sulcus. Intermaxillary sulcus, interpalatine sulcus. Palatomaxillary sulcus. Palatomaxillary sulcus. These are examples of plain sulcus. Plain sulcus के examples हैं. Plain sulcus. Okay. Then behind here is soft palate. Behind here is soft palate. यहाँ पे आगे है incisive fossa. Incisive fossa. Okay. Development of palate. Premaxilla. There is premaxilla. Premaxilla derived from frontonasal process. Premaxilla derived from frontonasal process. Then this is maxilla. Maxilla. Maxillary bone. बरोबर? Premaxilla कशामध्ये बघतोस तू? Notes मध्ये. हाँ? And then here from this maxilla comes palatine process of maxilla. बरोबर का रोहित? Palatine process of maxilla. Palatine process of maxilla which unite with each other. They also unite with premaxilla. Premaxilla. They also unite with premaxilla. Or incisor teeth, they are lying here on this premaxilla. So then I had told you that there are multiple possibilities. याद है आपको? क्या है वो possibilities? Premaxilla not being formed. Frontonasal process. So the incisor teeth will be there, not there. Okay, so there can be midline cleft palate. फिर
यहाँ पे the palatine process of maxilla fails to unite with premaxilla, so then there will be on the sides, okay, lateral cleft palate. The two, so that is possibility, second possibility. Third possibility, the two palatine processes fail to unite with each other. So that time there is midline cleft palate. और फोर्थ पॉसिबिलिटी, ये सबका यूनियन होता है और पोस्टीरियरली जस्ट पोस्टीरियर एंड पे दे फेल टू यूनाइट विद ईच अदर. Bifid uvula होता है और they whole unite but posteriorly they fail to unite. When the posteriorly they fail to unite, it leads, that is the fourth possibility, bifid uvula, bifid uvula. ऐसा ही मैंने आपको फेस का डेवलपमेंट एंड क्लेफ्ट लिप बताया, उसमें कितना पॉसिबिलिटीज था, कितना पॉसिबिलिटीज था उसमें. वाई जस्ट टू फास्ट रिवाइज दिस. ये क्या है, मीडियल नेजल प्रोसेस, lateral nasal process, then maxillary process. Philtrum is formed by union of two medial nasal process. That means Abhijit, first possibility, two medial nasal processes fail to unite with each other. क्या होगा, midline cleft lip. पैरेट बोल इसका तो क्या हो, हाँ, मिडलाइन क्लेफ्ट लिप. सी यहाँ पे जब हम पैलेट पढ़ रहे हैं ना, तो प्री मैक्सिला का अगर डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अकम्पनीड बाय मिडलाइन क्लेफ्ट लिप आल्सो, मिडलाइन क्लेफ्ट पैलेट, बिकॉज ये फ्रंटोनेजल प्रोसेस का ही, सी फ्रंटोनेजल प्रोसेस से इतना फॉर्म होता है ऐसे. अगर फ्रंटोनेजल प्रोसेस का लोअर पार्ट इज डिफेक्टिव और मिडलाइन क्लेफ्ट लिप भी होगा, मिडलाइन क्लेफ्ट पैलेट भी होगा, बिकॉज ये भी प्री मैक्सिला भी फॉर्म नहीं होगा. ओके, और मैंने आपको बताया था मैक्सिलरी प्रोसेस से इतना डेवलप होता है, ये एंगल आई का एंगल ये है. तो मैक्सिलरी प्रोसेस आगे जाता है, पहले लैटरल नेजल प्रोसेस के साथ यूनाइट होता है, फिर मीडियल नेजल प्रोसेस के साथ यूनाइट होता है. ओके, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, ये यूनियन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये यूनियन नहीं हुआ तो क्या होगा. Two medial nasal process fail to fuse with each other. What happens? Midline cleft lip. Maxillary process fails to unite with medial nasal process. क्या होगा? Paramedian cleft lip. If it happens on both the sides, इस साइड भी ऐसा हो गया, क्या होगा? Bilateral paramedial cleft lip. तीसरी पॉसिबिलिटी, लैटरल नेजल प्रोसेस के साथ मैक्सिलरी प्रोसेस फेल्स टू युनाइट विथ लॅटरल नेजल प्रोसेस. आम्ही उभं राहू, काय होईल, मॅक्सिलरी प्रोसेस फेल्स टू युनाइट विथ लॅटरल नेजल प्रोसेस. What is formed, Samruddhi, along the union of these two processes? Nasolacrimal duct. See here, this is the line of fusion of maxillary process and lateral nasal process. यहाँ पे nasolacrimal duct form होके अंदर चला जाता है. So that means if this third union doesn't happen, what happens? Oblique facial cleft. Okay. फोर्थ हमने बोला बायलैटरली. फिफ्थ क्या था? Two mandibular processes fail to fuse with each other. There will be cleft lower lip. Okay. Now coming to the muscles of the palate. बसा खाली.
Coming to the muscles of the palate. What are the muscles of the palate? हाँ? उसका डायग्राम कैसे निकालोगे? मैंने आपको याद है, आपको यूस्टेशन ट्यूब सिखाया था, which lies in sulcus tubule. वो यूस्टेशन ट्यूब के lateral part से tensor palatii takes origin. This tensor palatii then becomes flat. And forms palatine aponeurosis. और टेंसर पैलेटी दोनों साइड से ऐसे आके फ्लैट होता है. ओके, बीच में ये क्या है? ये यूवुला के लिए जगह है. उधर एक मसल है, मस्कुलस यूवुले कर, मस्कुलस यूवुले. ओके, so this is tensor palatii. From the medial side of the auditory tube is levator palate. So this is LP, this is TP. बराबर है ना? टेंसर पैलेटी एकदम साइड से आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टेंस करेगा पैलेट को. लिवेटर पैलेटी मीडियल साइड से सुपीरियर सरफेस पे इंसर्ट होगा. लिवेटर पैलेटी. यही चीज आप इसमें आप पैलेट में एक और डायग्राम निकाल सकते हो. आप और एक डायग्राम निकाल सकते हो पैलेट में. हार्ड पैलेट ऐसे निकालो, सॉफ्ट पैलेट ऐसे निकालो. नेसोफेरिंक्स का जो डायग्राम था, ऊपर यूस्टेशन ट्यूब निकालो, वहां से लिवेटर पैलेटी ऐसे जाते हैं. लिवेटर पैलेटी फोल्ड आपने देखा है ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ रेड फेस नेक में. लिवेटर पैलेटी फोल्ड. सो दिस इज हार्ड पैलेट, दिस इज सॉफ्ट पैलेट, दिस इज लिवेटर पैलेटी फोल्ड. तो उसका फंक्शन वही है कि क्या है, वो ऊपर से पैलेट पर अटैच्ड है. जरा सा ऐसा दिखाओ सॉरी. तो जो पैलेट ऐसा नीचे रहेगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर खींचेगा. लिवेटर पैलेटी फोल्ड. That prevents the food from going up also. The food can go down. Okay. Most of the time it does that. Most of the time when we are chewing, it is like this. When the food is going down, it becomes like this. So allowing food to go. Okay. It tries its best that food just goes down all the time. Sometimes it may come up as in vomiting. सबको बचपन में एक बार तो वॉमिटिंग हुआ है. और वॉमिटिंग का वर्स्ट एक्सपीरियंस रहता है जब वो नाक में से थोड़ा सा वॉमिट करते हैं और फिर आगे का आधा एक घंटा हम लोग को वर्ल्ड हेलिश लगने लगता है. आपके बाजू में किसी ने जिंदगी एक सफर है सुहाना लगाया तो भी आपको नाक में से जब वॉमिटर्स होते तो बेचारा सॉफ्ट पैलेट फुल ट्राई मारता है कि सारा वॉमिटर्स भी इधर जाए. वो इधर खड़ा रहता है बट अब लिवेटर पैलेटी. फिर यहाँ से और दो मसल्स ऐसे जाते हैं. कौन से? पैलेटोग्लॉसस, पैलेटोफैरिंजियस. दोनों के बीच में क्या है? पैलेटाइन टॉन्सिल. एंड देन यहाँ पे है मस्कुलस यूवुले. ओके, मस्कुलस यूवुले. फिफ्थ मसल. All the muscles of the palate are supplied by pharyngeal plexus, except मला ते तुला काल परवा पण मारला मी फेकून तुला. Except tensor palatii. All the muscles of the palate are supplied by pharyngeal plexus except tensor palatii, which develop from first arch, TP. मैंडिबुलर में क्या था वो? TT.
tensor tympani, tensor palatii, mylohyoid, anterior belly of digastric, and 4 muscles of mastication. Muscles developing from first pharyngeal arch. कौन से हैं? 4 muscles of mastication plus 4. TT, TP, mylohyoid and anterior belly of digastric. Second arch muscles, facial muscles and stapedius, stylohyoid, posterior belly of digastric and platysma plus 4. Muscles of face plus 4. Third arch, stylopharynx. Fourth arch, cricoid. Only one muscle. And sixth arch, all remaining muscles of larynx, pharynx. Palate, larynx, pharynx, palate के muscles, they come from the sixth arch. Except for one muscle of larynx, cricothyroid, which comes from fourth arch. One muscles of palate, which comes from first. So let's just revise that. All the muscles of the palate are supplied by pharyngeal plexus, except So this is about palate. Palate का nerve supply मैंने आपको बताया. Sensory supply of the palate. Sensory supply. There are 2 types of sensations. One are general sensations, one are taste. Tastes are coming by greater petrosal nerve through the palatine nerve, basically through the palatine nerve. So palatine nerves के through आता है. There are greater palatine nerve, lesser palatine nerve. All these palatine nerves, they supply the palate. Okay. All the muscles of the tongue are supplied by hypoglossal nerve, 12th nerve, except all the muscles of the tongue are supplied by 12th cranial nerve except palatoglossal, which is supplied by pharyngeal plexus. It is supplied by pharyngeal plexus. So ये जो chart है, this chart is all supplied by except supplied by. Okay, all supplied by and except supplied by. With that, I would like to ask you a question. Muscles of the tongue are formed from occipital somites. Muscles of the tongue are formed from occipital somites. Only 2 group of muscles in the head face neck develop from somites. Extraocular muscles and muscles of tongue. Therefore, the nerve supplying them, 3, 4, 6, supplying the extraocular muscle will have the component general somatic efferent. And hypoglossal nerve, which supplies the muscles of the tongue, will have also component general somatic efferent. Okay, so this is general somatic efferent. इसी के साथ मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ general somatic efferent. Palatoglossal is supplied by pharyngeal plexus. All the muscles of the palate are supplied by pharyngeal plexus, except tensor villi palatini. Tensor villi palatini, which is supplied by 5th cranial nerve, that is mandibular. Because it is developed from the first arch.
हेड नेक फ्रेस भगवान ने बनाया ही हम एनाटोमिस्ट के लिए, ताकि हम आपको क्वेश्चन पूछ सके, एमसीक्यू कर सके, क्वेश्चन पेपर सेटिंग सबसे बेस्ट हेड नेक। कैसा बना है देखो, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक फ्रॉम फर्स्ट आर्च, पोस्टीरियर फ्रॉम सेकंड। क्या जरूरत क्या था? कभी आपको भगवान मिलेंगे तो आप उनको क्वेश्चन पूछ, इतना अत्याचार करने का क्या जरूरत है? ये इधर से, ये उधर से, इसका नाव सप्लाई अलग, उसका अलग, याद रखो। पैलेट, pharyngeal plexus, all the muscles of the pharynx, but before that I would like to specify all the longitudinal muscles of pharynx. Longitudinal muscles of pharynx are supplied by pharyngeal plexus, except for stylopharyngeus, which is supplied by the ninth cranial nerve. This is because this is from the third arch. This is from the third arch. Okay. All the circular muscles of the pharynx are supplied by pharyngeal plexus. Supplied by pharyngeal plexus. हे काय आहे? pharyngeal plexus काय आहे? आपण आपलं pharyngeal plexus बोलतो. It is formed by cranial accessory vagus. Mostly cranial accessory is dominant, pharyngeal plexus. It's the cranial accessory which carries fibers from nucleus ambiguous. Cranial accessory which carries fibers from nucleus ambiguous, and through 10th nerve it supplies most of the muscles of the pharynx. ये बाद में 10th nerve के साथ merge हो जाता है, and then it supplies most of the muscles of the palate, pharynx, larynx. But officially we don't say cranial accessory all the time, because when we talk about laryngeal muscles, which is our next, but before that, the circular muscles of the pharynx are supplied by pharyngeal plexus, all circular muscles except for cricopharyngeus, which is supplied by recurrent laryngeal nerve. Recurrent laryngeal nerve. All the muscles of the larynx, all the muscles of the larynx are supplied by recurrent laryngeal nerve. Recurrent laryngeal nerve, except for cricothyroid. Cricothyroid. It is supplied by external laryngeal. कुणाला इथे काही शॉर्ट फॉर्म कळत नसेल तर मला विचारा. हे pharyngeal plexus आहे, हे recurrent laryngeal nerve आहे, हे pharyngeal plexus आहे, हे tensor villi palatini, stylopharyngeus, cricopharyngeus, circular muscles of pharynx, longitudinal muscles of pharynx, all the muscles of pharynx, palate tongue. These are the 5 things you need to know. ये 5 things पे आपको एग्जाम में वाइवा में क्वेश्चन पूछेंगे, आपको एक आध एमसीक्यू आ जाएगा इसके ऊपर, आज नहीं तो कल. ओके, एकदम फेवरेट टॉपिक्स है एग्जामिनर्स. सबने नोट कर लिया? Then I'll just cover a very short topic, another chart like this. We will talk about a ganglion. It is functionally related to which nerve? Functional relation. And anatomical relation to which?
functionally related to one nerve, anatomically related to another. कितने गैंग्लियन है हेड पे स्नेक? आई एम सो हैप्पी, आपको मालूम है चारों कुछ। सबसे पहले सिलियरी गैंग्लियन। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, सॉरी और एक फैक्टर ऐड कर देता हूँ। आपने ऑलरेडी लिखा है तो ठीक है चलो। सिलियरी गैंग्लियन फंक्शनली रिलेटेड टू, मतलब मुझे खाली न्यूक्लियस ऐड करना था, उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब कहाँ से फाइबर आते हैं, तो अपन बाद में ऐड करें। फंक्शनली रिलेटेड टू विच नर्व? सिलियरी गैंग्लियन। एनाटॉमिकली रिलेटेड टू नेसोसिलियर गैंग्लियन। हाँ, एडिंगर वेस्टफाल, एडिंगर वेस्टफाल से वो आता है, एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। वो थर्ड नर्व के थ्रू सिलियरी गैंग्लियन को सप्लाई, एडिंगर वेस्टफाल। नेक्स्ट, हाँ, ओप्टिक गैंग्लियन फंक्शनली रिलेटेड टू नाइन्थ नर्व। क्यों? बिकॉज इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, बरोबर, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस थ्रू नाइन्थ नर्व सप्लाई द ओप्टिक गैंग्लियन। सब जगह आप चाहिए तो, बिकॉज आप ये कॉलम ना फंक्शनली रिलेटेड तो आइडियली यहाँ पे आना चाहिए था, फिर आप थोड़ा गिच मिट कर सकते हो उधर, ऐसा करके। ओके, इसके थ्रू इसको सप्लाई। फिर हम एनाटॉमिकली रिलेटेड टू बरोबर ना, मैंडिबुलर ना, उसका लोकेशन है बिटवीन टेंसर पैलेटी एंड मैंडिबुलर। और मैंडिबुलर के ब्रांचेस, कौन सी ब्रांच? ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व उसके फाइबर्स लेके जाती है। तो उसका मतलब क्या है, ये इसके थ्रू इधर आती है, ओके, और इसके थ्रू पैरोटिड को जाती है। सपोज इसमें हमने एरिया ऑफ सप्लाई ऐड कर दिया, ये इसके थ्रू इधर आती है और नेसोसिलियरी के थ्रू सिलियरी बॉडी और आइरिस को सप्लाई कर, बरोबर। पर ये रब करते पूरा पहले से चालू कर, याद रखो। बोलिए। हाँ, अभी आप पहुंच गए क्या? हाँ, उसको 402 में आने को बोलो, सचिन साहब सर उनको देने को बोलो, फिर मैं वहाँ से हैंडल कर। 402 लेक्चर पर मैं और सचिन उतर जाएंगे थोड़ी देर में। अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है छोटा सा सेशन, तो फिर हम लोग 402 में, मैं और सचिन सर।
आप 402 में मिल रहे हो, अभी आएगा ना 2 मिनट में, अगर आ रहा था 402 में। अच्छा चलेगा चलेगा, तो उसके बाद उसको मुझे ही देने को बोला ना। हाँ लेट हिम कॉल मी ना। हाँ चलिए चलिए, तो आई विल हैंड इट ओवर टू हिम। वो एक्सरे का फॉर्म। चलेगा चलेगा, आईडी आईडी दे दो, आईडी दे दो, ये सब आपके पास वापस आ जाए। डोंट वरी। हाँ चलो थैंक यू, सॉरी। ओके, सो आइडियली फर्स्ट क्या आना चाहिए? न्यूक्लियस। फिर क्या आना चाहिए? हाँ फंक्शनली रिलेटेड, फिर गैंग्लिया, फिर एनाटॉमिकली रिलेटेड, फिर एरिया ऑफ सप्लाई। ओके चलो लेट अस स्टार्ट। पहला कौन सा न्यूक्लियस हमने देखा? एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस। फंक्शनली थर्ड cranial nerve, it sends fiber to ciliary ganglion, anatomically related to naso ciliary nerve, area of supply ciliary body and iris. नेक्स्ट न्यूक्लियस, पहले अपन गैंग्लियन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कौन सा गैंग्लियन? ओटिक गैंग्लियन। तो उसको फाइबर्स कहाँ से आते हैं? इंफीरियर सैलिवेटरी। फाइबर्स आर गिवन टू इट 9th cranial nerve, and through mandibular nerve का branch auriculotemporal, it supplies the parotid. बरोबर? Anatomically related to parotid, functionally related to nerve. बरोबर? त्यानंतरचा गैंग्लियन कोणता? हाँ तुम लोगों को टेरिगोपैलेटाइन पढ़ा है? क्वेश्चन पूछूंगा मैं उसको। सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, फंक्शनली रिलेटेड टू प्रगति, functionally related to 7th cranial nerve. Fibers come from superior salivatory nucleus. Submandibular ganglion, anatomically related to lingual nerve. lingual nerve में से फाइबर जाते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड पे। सबमैंडिबुलर ग्लैंड। क्या तेरा फेवरेट कौन सा अभी सबसे चिल्ला रहा है? हाँ स्पेलिंग आता है क्या? टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन। Functionally related to both 7th cranial nerve. Functionally related to 7th cranial nerve. Its fibers come from lacrimetry nucleus. Fibers come from lacrimetry nucleus. Lacrimetry nucleus, 7th cranial nerve, pterygopalatine ganglion, anatomically related to maxillary nerve and supplies lacrimal gland. Lacrimal gland. Okay?
ये जो मैंने अभी आपको बताया है ना, ये सबसे शॉर्टकट से, इतना लिखा आपको कुछ नहीं याद आया, इतना लिखा तो भी चले। इसके इसके जो बीच में एक्सटेंशन है, एडिंगर वेस्पल, थर्ड क्रेनियल नर्व, टू बी स्पेसिफिक उसकी इंफीरियर ब्रांच, नर्व टू इंफीरियर ऑब्लिक में होती, देन सिलियरी, मेसोसिलियरी एंड सिलियरी बॉडी एंड आइस। इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, नाइन्थ क्रेनियल नर्व, टिम्पैनिक ब्रांच, बरोबर की नाही? टिम्पॅनिक ब्रांच, मग लेसर पेट्रोजल नर्व, मग मोठी, बरोबर? लेसर पेट्रोजल नर्व, मोठी गैंग्लियन, मैंडिबुलर नर्व, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, पैरोटिड, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, सेवेंथ नर्व, याच्यामध्ये काय आहे? खड़े रहो आप, तू नहीं, स्कार्फ वाली लड़की, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शेर शेरबान। ये क्या है? एनआई, नर्वस इंटरमीडियट, नर्वस इंटरमीडियट, सेवेंथ क्रेनियल नर्व, मग असं डायरेक्ट काय आहे मध्ये? कॉर्डा टिम्पैनी, कॉर्डा टिम्पैनी लिंगुअल, ये लिंगुअल एक्चुअली इधर है, कॉर्डा टिम्पैनी लिंगुअल एंड देन लिंगुअल से डायरेक्टली सबमैंडिबुलर है, कॉर्डा टिम्पैनी लिंगुअल, submandibular ganglion and submandibular gland, ओके? ये सबसे टॉक्सिक। लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस, इधर वापस क्या आएगा? नर्वस इंटरमीडियस, देन सेवेंथ क्रेनियल नर्व, देन टेरिगोपैलेटाइन, ऐसा डायरेक्टली ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, नर्व टू टेरिगॉइड कनाल, बरोबर? मग टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, नर्वस इंटरमीडिएट, सेवेंथ नर्व, ग्रेटर पेट्रोजल, नर्व टू टेरिगॉइड कनाल, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, देन मैक्सिलरी, zygomatic ब्रांच, zygomatic और टेम्पोरल, लैक्रिमल, मैक्सिलरी के बाद भी ना zygomatic ब्रांच, zygomatic और टेम्पोरल, लैक्रिमल ब्रांच एंड देन लैक्रिमल ग्लैंड। याद रहा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो। दिस इज हाउ फाइबर्स रिंग, पैरासिट, ये सगळे न्यूक्लिया आहे। लास्टची मुलगी, या सगळ्या न्यूक्लियाचा फंक्शनल कॉम्पोनंट कोणता आहे बाळा? गायत्री किती काय फंक्शनल कॉम्पोनंट? आर्यन, जनरल विसरल इन्फ्रारेड, पॅरासिम्पॅथेटिक च्या सप्लाय मध्ये जे न्यूक्लियाय इन्व्हॉल्व्ड असतात, जनरल विसरल, ओके? हा जनरल विसरल इफरंट अजून एका नर्व मध्ये असतो, 10th नर्व, जो यहाँ पे नहीं है बिकॉज उसके गैंग्लिया हेड फेस नेक में नहीं है। वेगोबॉर्न नर्व है, वो नीचे जाके उसके गैंग्लियन एब्डोमेन में होते, इसके लिए 10 को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया। 7, 9, 10 में 10 मीन्स 2 स्पेशल, 1 जनरल, 2 स्पेशल विसरल एफरंट इफरंट और 1 जनरल विसरल। तो ये एक ऐसा हिस्टोरिकल डायग्राम है जो
आपको सारे शॉर्टकट्स बता देगा कि ग्लैंड्स के नर्व सप्लाई कैसे। ओके, सो थैंक यू, प्रोसीड।